Hello, my dear student. I hope you all are good and doing your study at your home. I am your Ajit sir, teaching you maths, and today's topic is the same pairs of angles, which we have discussed in our previous class. If you had not seen the video yet, then please go through the link and see the complete video. Okay, for the pair of angle, then you will be able to solve practice 15.3. Today we will solve this exercise related to pairs of angles, which we have already completed in our previous class. Okay, now let's start. You all know about the pairs of angle. We have discussed about the complementary angles, we have discussed about the supplementary angles. Okay, and we also discussed about the adjacent angle, vertically opposite angles. Okay, now in practice 15.3 you can see in your book that there is question number 1, that give the complement for each of the following. There are some angles and you have to find out the complementary angles for these. वहाँ पे कुछ एंगल्स लिखे गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसके लिए आपको कंप्लीमेंट ढूंढना है. ठीक है, कंप्लीमेंट ढूंढने का मतलब ये हुआ कि उसका कौन सा ऐसा एंगल होगा जो उसके साथ मिल करके उसके साथ ऐसा पेयर बनाएगा कि उन दोनों पेयर्स को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे. नाउ लेट्स रिकॉल दैट व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स. द पेयर ऑफ एंगल in which the sum is 90 degree is called complementary angles. We all know that and we already discussed about this. Okay, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था पिछले क्लास में कि ऐसे पेयर ऑफ एंगल यानी ऐसे दो एंगल जिनको ऐड कर दिया जाए, जिनका सम निकाला जाए, अगर वो 90 हो जा रहा है देन उसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स. और मैंने उसमें बताया भी था कि कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, नाउ for question number 1, 65 degree. For 65 degree you have to find the complement. To find the complement it is very easy. Just subtract it from 90 degree. क्योंकि सम 90 डिग्री होता है तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करिए, जस्ट ठीक है उसको क्या करिए 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए. नाउ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा, इट विल बी 25 डिग्री. एंड नाउ दिस इज द कंप्लीमेंट फॉर दिस एंगल 65 डिग्री. ओके, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जो भी एंगल दिया है अगर कंप्लीमेंट पूछा है उसको 90 में से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 90 डिग्री, just subtract from 90 degree and then you will find the complement for that angle. उस एंगल के लिए आप कंप्लीमेंट ढूंढ लेंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज 82 डिग्री. 82 डिग्री. नाउ फाइंड आउट which angle is complement for this angle. What will we do? Very good, we will subtract it from 90 degree. 90 minus 82, and what is the answer? It is 8 degree. And now this is your answer. For complement just subtract the angle from the 90 degree. I hope you all understand very well. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, गिव द सप्लीमेंट. व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, रिकॉल करिए, लेट्स रिकॉल, याद करिए क्या होता है. तो एंगल इन विच द सम ऑफ पेयर इज 180 डिग्री. द पेयर ऑफ एंगल्स इन विच द सम इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. यानी ऐसा पेयर ऑफ एंगल, ऐसे दो एंगल्स का जोड़ा जिसको ऐड करने पे 180 डिग्री मिल जाए, 180 डिग्री मिल जाए. ठीक है, 180 डिग्री सम अगर 180 डिग्री हो जाए देन हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे. पेयर में होना चाहिए, याद रहे. ठीक है, पेयर में ही होना चाहिए, दो एंगल ही होने चाहिए. ठीक है, नाउ टू फाइंड द सप्लीमेंट व्हाट विल वी डू, द सेम प्रोसेस.
here we subtract from 90 degree and here we will subtract from 180 degree. Very good. Now for supplement, subtract it from 180 degree. Subtract it 180, 145. Now this will be 135 degree. Okay, this will be the supplement for this angle. Next one, 80 degree. What will we do? It's the same thing. We will subtract it from 90 or 180 degree. 180 degree. Why? The reason is because the sum for the supplement is 180 degree. So you have to find, you have to subtract it from 180 degree. So let's subtract 180 degree minus 80 degree. And what will be the answer? The answer will be 100 degree. So 100 degree is supplement for this angle. Understood? Okay. Next one is, which of the following pairs are complementary and supplementary? कौन से इसमें से जो पेयर्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं और कौन से कंप्लीमेंट्री हैं? ठीक है, आप खुद से कर सकते हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से, हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था, अभी भी डिस्कस हमने किया, रिकॉल किया, रिमेंबर किया कि सप्लीमेंट्री क्या है और कंप्लीमेंट्री क्या है. तो कंप्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए? सम कितना आना चाहिए? What will be the sum for complementary angle? Then the sum will be 90 degree. 90 डिग्री सम होगा. अगर इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ गया, यहाँ पेयर्स ऑफ एंगल्स दिए गए ना, आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दीज आर पेयर्स ऑफ एंगल, दो एंगल हैं साथ में पेयर्स में. तो आपको सिंपली क्या करना होगा? टू फाइंड आउट दैट टू आइडेंटिफाई दैट इन विच in both of them which one is complementary and which one is supplementary, you have to calculate the sum for all. आपको इनका sum calculate करना होगा. You have to find out the sum for this. So let's add both of them. 85 degree plus 95 degree. And what will be the sum for this? If you add 95 plus 5, 100, and the remaining is 80. 180 is 180 degree. 180 degree. 180 degree. ठीक है? Now, for इन दोनों में से किसके लिए 180 डिग्री चाहिए? कंप्लीमेंट्री के लिए या सप्लीमेंट्री के लिए? सप्लीमेंट्री के लिए. Then these pairs is called supplementary. Supplementary because the sum of these pairs is this pair is equal to 180 degree. The reason is the sum of this pair is 180 degree. 180 degree अगर इसका सम आ गया तो वो supplementary है. Now let's add 55 and 35. 55 plus 35. What will be the answer? 55 plus 5, 60, and the remaining is 30, 90 degree. 90 degree. Now, if the sum is 90 degree, then this pair is known as complementary angles. Which angle? Complementary angles. Complementary angles. Understood? Very good. Okay, now I hope that this is enough for today. You can solve by your own self and you can write it in your notebook also, and your homework will be, here is your homework. In your homework, do question number 1 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड, and question number 3 third. All the remaining part of question number 1, 2 and 3 you can solve in your PC copy. Okay, so students, for today, thank you class.